This is a third lecture for economic survey. We are basically will be taking mainly chapter number 3. So far we have explained chapter 1 and 2. So one was the state of economy and the second was the medium term strategy or medium term outlook. This chapter number 3 is mainly for the fiscal developments. So third chapter heading is fiscal development. Fiscal development. ठीक है, आज के लेक्चर में ऑब्वियसली फर्स्ट विल बी एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट इन द सेम क्लास बजट की भी क्लास है आज. ठीक है, तो बजट विल बी कंप्लीटिंग ऑल्सो इन अबाउट 1 hour. बट फर्स्ट कंप्लीट दिस चैप्टर नंबर 3. So first hour is basically for this fiscal development and then the budget. Now related to the fiscal development, few important indicators of fiscal development like the data of fiscal deficit, primary deficit, revenue deficit. तो ये डेटा का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो आपको मालूम रखना चाहिए. ऑब्वियसली जो लास्ट 3-4 ईयर का डेटा है और जो फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड है, मतलब जो बजट के अंदर जो प्रोविज़न है. So what is the relevant because those data will be used in order to elaborate or explain the answer. That means pre-COVID situation में क्या था, post-COVID situation में क्या है, fiscal consolidation. Because when we explain the fiscal development, remember there will be two sides of it. One side will be all about the taxation. That means what will be the source of the revenue. So source of the revenue may consist of the tax revenue, may be consisting of the non-tax revenue. But obviously the most important component is the tax revenue. Within tax revenue you will further divide it into two parts, direct tax and the indirect tax. Direct tax को further आप divide कर देंगे between corporate income tax and the personal income tax. जो indirect taxation होगा उसके अंदर union excise duty आ जाएगा, GST and so on. So how those taxes has changed over a period of time, what is the composition of that tax, how much is coming from the corporate income tax, how much is coming from the personal income tax, what is the share of GST. Then after explaining the revenue side, then we have to move to the expenditure side. What are the major components of the expenditure? So related to the expenditure, as stated in chapter 1 as well as in chapter 2, the capital expenditure part is most significant. So how that capital expenditure has moved over a period of time. So we will that means revenue and that expenditure both clubbed will be determining the fiscal space. How much space you have. Space का मतलब होता है expenditure और revenue में कितने का imbalance है. If less is the imbalance, you have a more fiscal space to maneuver, to increase your expenditure. If the gap is more, you have less fiscal space. So government must have the fiscal space to adjust its own policy. So adjustment of the policy basically refers to change in the government expenditure as well as the increase in the tax revenue. So tax के अंदर जो buoyancy है उसका description भी है. There are certain initial part which has been explained conceptually, but we will come to that concept part later. First we will explain the major indicators like a fiscal deficit और primary deficit का trend. तो fiscal deficit और primary deficit का trend में 2018 to 2023 का information है और budget से 2024 का information मिलेगा. So obviously during the COVID period or due to obvious reason, the fiscal deficit will increase. So how that fiscal deficit has moved over a period of time. So one part will be the fiscal and the primary deficit. A revenue deficit is table के अंदर नहीं है, but revenue deficit you can find in somewhere else. So we'll first of all do one thing, just make a table first for fiscal deficit and primary deficit. Can write it in this form. Fiscal deficit, primary deficit,
एंड रेवेन्यू डेफिसिट। कॉलम अब बना लो, जो इंफॉर्मेशन जहां मिलेगा वहां लिख देंगे बस। For different year information has been given starting from 2018 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जहां से ये टेबल स्टार्ट हो रहा है वहां से ईयर डाल देना। फाइनेंशियल ईयर 18 है, फिर 19 है, फिर फाइनेंशियल ईयर 2019, फाइनेंशियल ईयर 2020, फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, डिफरेंट ईयर के लिए जो इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल so just copy from the economic survey for 2018. First write it for the fiscal deficit. Fiscal deficit is this blue one. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट के लिए 2018 3.5, 2018 3. allow in the fiscal deficit column 3.5, then 3.4, then 4.7, 9.2, 6.7, 6.4। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट फॉर 2018 फाइनेंशियल ईयर 3.5, then 3.4 for 19, 2020 4.7, 21, so COVID year is 9.2, 6.7, 6.4, 6.4. So we are moving towards fiscal consolidation. You are moving towards fiscal consolidation. So obviously the impact on fiscal imbalance in terms of the high fiscal deficit was realized due to the COVID-19 pandemic. So that pandemic year it was 9.2, the highest, and after that as the economy is recovering, the deficit is declining. So deficit has declined from 9.2 to 6.7 and then 6.4. And what is the budget estimate for next year? Next year के लिए 5 point budget, you will get that information. $5.9 2024 फिस्कल डेफिसिट 5.9, तो 2024 के लिए भी लिख लीजिएगा, वो अकॉर्डिंग टू द बजट है, लास्ट वाला इंफॉर्मेशन जो लिखे हुए। क्लियर? बेसिकली आप ये टेबल कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, इस फॉर्म का टेबल पहले कंप्लीट करके ये फिस्कल डेफिसिट का कॉलम बता रहे हैं और 2024 तक के लिखिएगा। ये एज पर दी बजट इट विल बी 5.9। ये बजट एस्टिमेट है फॉर 2023-24। ठीक है, देन द टेबल फॉर प्राइमरी डेफिसिट, एंड प्राइमरी डेफिसिट एज यू नो इज व्हाट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो fiscal deficit minus interest payment is primary deficit. So how much is the interest burden as a percentage of GDP, वो भी different year का आपको इस दो टेबल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। So in the primary deficit it was 0.4 in 2018, stayed there at 0.4 in 2019, increased to 1.6, increased to 5.7, dropped down to 3.3 and 2.8. This is for the primary deficit. ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट 0.4, 0.4, 1.6। कोविड ईयर वाले इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, बिकॉज वो कहीं कहीं आपको एक्सप्लेन करते समय इंपॉर्टेंट होगा लिखने के लिए।
कि fiscal deficit was as high as 9.2% and primary deficit was as high as 5.7%, and then it reduces from 5.7 to 3.3, 2.8, and budgeted for 2024 primary. Budgeted for 2024 primary deficit budgeted is 2. Primary deficit 2.3 लोअर वाला वैल्यू, ठीक है. बजटेड फॉर 2024 इज 2.3 प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है. अब वहां पे सर्वे के अंदर वो इंफॉर्मेशन इनफैक्ट आपको सिर्फ प्राइमरी और फिस्कल का दिया गया, रेवेन्यू डेफिसिट का इंफॉर्मेशन वहां पे उस टेबल के अंदर नहीं है. दैट टेबल इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग प्राइमरी एंड द फिस्कल वन, सो यू कैन यूज दिस फ्रॉम द बजट. बट बजट से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो 21 का है, 22 का, 23 का और 24 का. जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो लिख लेना. तो फॉर इन द कॉलम ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट यू कैन राइट रेवेन्यू डेफिसिट 2021 7.3, देन एग्जैक्ट मार्किंग नहीं है वहाँ पे, सो यू कैन रफ एस्टिमेट है. लास्ट वाला इंफॉर्मेशन लिखो आप 2.9, 2021 7.3 एंड 2024 2.9. ठीक है, ये फिस्कल इंडिकेटर हो गया. इनफैक्ट फिस्कल इंडिकेटर. नाउ व्हेन वी एक्सप्लेन द अदर पार्ट, रिमेंबर if you have any confusion about those type of deficit, remember when we talk about the fiscal deficit, then budget is basically divided into two parts, your revenue account and the capital account. So related to the revenue account and the capital account, capital account के अंदर भी expenditure है और receipts है, और revenue account के अंदर भी revenue expenditure होता है और revenue receipts होते हैं. revenue receipts है जहाँ पे कोई liability create नहीं हो रही है. capital receipts हो सकते हैं जहाँ पे आपकी liability create हो रही है, like borrowing. So borrowing basically is you have to repay. So when you talk about the fiscal deficit, so when we talk about the fiscal deficit, then fiscal deficit refers to what? All expenditure, revenue plus capital expenditure minus all receipts excluding borrowing. All receipts excluding borrowing. So it is expenditure minus all receipts excluding borrowing. Borrowing को exclude करते हुए, borrowing को अगर include कर लेते हैं तो इस fiscal deficit को budget deficit कहा जाता है. बट budget deficit उतना relevant indicator नहीं होता, इसलिए आज की डेट में वो information available नहीं होता है. तो fiscal deficit is basically all expenditure minus receipts excluding the borrowing. And when we talk about the revenue deficit is only what? Revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue expenditure minus revenue receipts ये करंट गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है उसको इंडिकेट करता है. गवर्नमेंट का जो करंट पोजीशन है डे टू डे फंक्शनिंग पे. तो रेवेन्यू डेफिसिट जैसे अपने एफआरबीए में रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 0. तो रेवेन्यू अकाउंट में बैलेंस रिक्वायर्ड है बिकॉज वो एक तरीके से मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट देन इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस interest payment. So those are basically the terms. Now when we explain the fiscal development for the year 2023-24, some basic points in the category of introduction you can write. First part mein remember there are different form of table also given in this budget, like composition of resource, composition of the revenue, how much is coming from which taxes. So how much is coming from which taxes, like one composition, this composition of the tax profile of the union government. So GST is the largest
contribute 28%, and corporate income tax and personal income tax both are equal to 26. So majority is now coming from the direct tax, which is a good sign. And indirect tax is basically your GST, custom and union. But ये wrongly ये 28 नहीं होगा, ये just 12% होगा. It is not 26. Total is more than that. So this is basically 12%. This is 52, 28, 80 and 8. So it is union excise duty is basically only, it is 12% of the overall tax revenue. So the largest component, if अगर आपको ordering करनी है कभी किसी क्वेश्चन में, तो largest component is GST, then you can say corporate या पर्सनल, दोनों बराबर हो गए. कॉर्पोरेट जो एब्सोल्यूट नंबर में माइट बी सम डिफरेंसेस होंगे, परसेंटेज में अप्रोक्सीमेटली वही लिखा जा रहा है. देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड आफ्टर दैट द कस्टम ड्यूटी. ठीक है. एंड दिस डिफरेंट, यू कैन जस्ट मेक वन टेबल मोर हियर. उसके बाद लिख लीजिएगा कंपोजिशन ऑफ टैक्स. Composition of tax. GST 28%, corporate income tax 26%, personal income tax 26%, union excise duty 12%, and custom 8%. One is basically the composition. Other information is basically of the growth of the collection. At what rate taxes have increased? So at what rate taxes are increased? For that purpose, growth in the centers direct taxes are higher than the corresponding long-term average. So one information is basically given, but that blue bar diagram is basically average of 2013 to 2019. 2013 to 2019 का वो एवरेज ग्रोथ रेट है. एंड द ग्रीन वन इज बेसिकली अप्रैल टू नवंबर 2022. सो इट इज कंपेयरिंग दैट लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ विद द करंट ग्रोथ रेट. सो करंट ग्रोथ रेट इज बेसिकली 26.7, but it is comparing it with that 2013 to 2019, that period. So first write the introductory part first. जीएसटी इंक्रीज होना तो रिग्रेसिव इन नेचर हो, बट उसका अगर 28% तो ये इकोनॉमिकली अच्छा है कि वो बैड है. रिलेटिव परफॉर्मेंस होगा ना. इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टैक्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Over a period of time, the share of direct taxes will continue to rise. Progression is basically that. You have to look from the direct tax point of view. Direct taxes will continue to rise. मतलब 1991 का सिचुएशन अगर आप देखो, जब इकोनॉमिक क्राइसिस था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या जब से टैक्स रिफॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो ये जो भी करंट आउटकम है वो सारे टैक्स रिफॉर्म का वी कैन से द क्यूमुलेटिव इफेक्ट है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट यूज्ड टू बी 80-20 रेशियो. मतलब डायरेक्ट टैक्सेस वर ओनली 20, इनडायरेक्ट वाज अबाउट 80. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 1/3 2/3 हो गया, 66% 33%, एंड नाउ ऑलमोस्ट equal, and now the direct tax is exceeding. That means from 20% to 52%. That is the growth of direct tax in the overall tax collection. So that basically indicates progression. GST तो अलग अलग टैक्स के कॉम्बिनेशन में आ गया, तो कॉम्बिनेशन में आ गया, बट अगर हम उसको 91 से कंपेयर करो तो 91 में जब ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर अबाउट 80% हुआ करता था, वो वैल्यू अब घट के कहाँ आ गई है, लेस देन 50% पे आ गया. ठीक है. सो दैट इंडिकेट प्रोग्रेशन इन द टैक्सेशन सिस्टम. वो प्रोग्रेशन इन द टैक्सेशन सिस्टम है. जीएसटी का तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल टैक्सेशन व्हिच हैज बीन क्लब्ड इनटू वन सिंगल टैक्सेशन. प्लस द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द टैक्स इज बेसिकली नाउ कमिंग फ्रॉम द सर्विस टैक्स. तो जैसे जैसे इकोनॉमी में सर्विस का शेयर बढ़ता जाएगा और मोर एंड मोर सर्विसेज को हम टैक्स नेट के अंदर लाते जाएंगे, तो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन
इंप्रूव हो जाएगा. इट इज नॉट दैट द बेस रिमेन सेम. बेस भी तो बढ़ रहा है, टैक्स बेस बढ़ रहा है. टू स्टार्ट विथ ओनली 3 सर्विसेज वर टैक्स, and now there are many services which are in the tax bracket. So your tax rate and tax base both are basically changing. First introductory part. With the continuing global risk and uncertainty, with the continuing global risk, with the continuing global risk and uncertainty, with the continuing global risk and uncertainty, the availability of fiscal space, the availability of fiscal space with the government, availability of fiscal space with the government has become paramount, has become paramount. It is especially true, it is especially true following the recent incidents. It is especially true following the recent incidents of pandemic, recent incidents of pandemic, when all when the fiscal policy, when the fiscal policy became an effective, fiscal policy became an effective macroeconomic stabilization tool. Fiscal policy became an effective macroeconomic stabilization tool globally. Macroeconomic stabilization tool globally. रिमेंबर, इस तरीके के सिचुएशन में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ऑल्दो इंक्लूड फिस्कल एंड मॉनेटरी बोथ, बट मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स थ्रू ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. It works through change in the rate of interest. So if you are using the monetary policy, how you can stabilize the economy? Through monetary policy, by increasing money supply, by reducing interest rate, and by reducing interest rate, what you are expecting? Investment will increase. But जब प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव होगा वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से गाइडेड नहीं होगा, इट इज ऑल्सो गाइडेड बाय द डिमांड साइड. तो पैंडेमिक रिलेटेड सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा था एक्चुअल में, there was lack of demand, so the even when the rate of interest will lower, the private sector will not invest more. So monetary policy was basically not effective anywhere in the world. So in that context, fiscal policy became the most important tool, and the fiscal policy relates to government expenditure as well as, but during the pandemic period you cannot impose more and more taxation, so you have to increase more and more expenditure. You can spend more, you can spend more only when you have the fiscal space available. मतलब fiscal policy, fiscal जो imbalance अगर वो कम हो, then you have more fiscal space available to maneuver. You can increase more expenditure. By increasing the expenditure, you are creating basically demand. On one hand, you are supplementing the private investment. On the other hand, by giving transfer in the form of food or other cash transfer, you are sustaining that demand. But for that purpose, all require expenditure, and to finance that expenditure you require taxation. So fiscal policy का importance है, मतलब in future suppose if again this type of pandemic will come, then what is the learning from this pandemic? Learning from this pandemic that monetary policy is not going to help you in that condition. You have to rely on fiscal, but you can use your fiscal policy well only if you have fiscal space available, which means the gap between expenditure and revenue should be as far as possible low, so that अगर क्राइसिस कंडीशन होगा तो हम एक्सपेंडिचर को फिर बढ़ा सकते हैं. बट अगर ऑलरेडी स्पेस ना हो, ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, उस कंडीशन में अगर क्राइसिस डेवलप होता है, देन फिस्कल imbalance will impose the other constraint for the economy. So in that context, fiscal policy is more useful. Continue करना उसमें. Particularly in India, when all economic activities
particularly in India, when all economic activities had reached a standstill, had reached a standstill, has had reached a standstill, fiscal policy was instrumental in fiscal policy was instrumental in fiscal policy was instrumental in providing a safety net. Fiscal policy was instrumental in providing a safety net to the vulnerable. A safety net to the vulnerable. After comma, reviving the economy by boosting demand. Reviving the economy by boosting demand. And addressing certain domestic supply side constraint. And addressing certain domestic supply side constraint. Addressing certain supply side constraint through public investment and sustained structural reform. Structural reform. Next paragraph. Government of India adopted a calibrated fiscal response. Okay, this type of keywords basically you are expected to use. Government of India adopted a calibrated fiscal policy response to pandemic. Calibrated fiscal policy response to pandemic. And plan to withdraw the fiscal stimulus. Plan to withdraw the fiscal stimulus gradually. While India entered the pandemic with a stressed fiscal position. After comma, the government's prudent and calibrated fiscal response. Enabled stable public finance even in the situation of uncertainties. The fiscal deficit of union government which reached 9.2% of GDP. The fiscal deficit of union government which reached 9.2% of GDP during pandemic year 2020-21. During pandemic year 2020-21 has moderated to 6.7%. Has moderated to 6.7%.
In financial year 2022, 6.7% in financial year 2022, and it is further budgeted to reach. It is further budgeted to reach. Further budgeted to reach 6.4%. 6.4% in financial year 2023. In financial year 2023. And the union budget 2023-24, and the union budget 2023-24, union budget 2023-24, project fiscal deficit to be at 5.9%, to be at 5.9%, to be at 5.9% for financial year 24, for financial year 2024. सर्वे के अंदर बस वो पैरा एक लाइन आप बजट वाला इंट्रोड्यूस कर दे, ऐड कर लेते हैं. This gradual decline is in accordance with, this gradual decline is in accordance with this gradual decline is in accordance with the fiscal glide path, fiscal glide path, use the word fiscal glide path, fiscal glide path, and it is a result of, it is a result of careful fiscal management. It is a result of careful fiscal management, careful fiscal management, supported by buoyancy in tax revenue collection, supported by buoyancy in tax revenue collection, buoyancy in tax revenue collection in last few years, mainly 2 years after pandemic, in last few years. Next paragraph. This resilience in the fiscal performance, this resilience in the fiscal performance of center, this resilience in the fiscal performance of center has resulted due to recovery in economic activity, resulted due to recovery in economic activity, recovery in economic activity, comma, buoyancy in revenue, buoyancy in revenue, buoyancy in revenue, and conservative assumption of macroeconomic variables, conservative assumptions of macroeconomic variables, conservative assumption of macroeconomic variables. Conservative assumption of macroeconomic variable का मतलब है when we are talking about, these are basically percentage. तो आप टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिख रहे हैं. तो अगर हमने कंजर्वेटिव असम्पशन ले रखा है जीडीपी का कि नेक्स्ट ईयर का जीडीपी ये होगा, बट यू व्हाइल टेकिंग दैट एस्टिमेट यू आर वेरी कंजर्वेटिव, मतलब हमने लोअर ले रखा है. तो अगर लोअर ले रखा होगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, फिर बेटर दिखेगा. टैक्स जीडीपी का जो रेशियो वो तो बेसिकली रेशियो है. इफ यू आर टेकिंग अ वेरी हाई बेस तो फिर वही एब्सोल्यूट नंबर होगा, वो लोअर परसेंटेज आ जाएगा. सो इट इज बेसिकली इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स. देयर इज ए रिकवरी इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी,
So GDP is rising. There is improvement in the tax buoyancy. So tax collection is rising. And above all, we have also taken a conservative assumptions about the macroeconomic variables. Content this. The prudent assumption in budget of 2023 provided a buffer to the government during the global uncertainty. ठीक है, दिस टाइप ऑफ टेबल आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डेटा अगर सर्च करें देन यू कैन गो थ्रू बट यू कैन इग्नोर इट. Like this is basically giving all the information about the revenue receipts budgeted for financial year this. ये absolute number है in terms of how many lakh crore. तो ऐसे डेटा का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना. As per percentage of budget estimate वो information given है और ये ईयर टू ईयर ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज. 5 year ग्रोथ अप्रैल टू नवंबर 21, अप्रैल टू नवंबर 2000. तो रेवेन्यू रिसीट्स अगर हम इन टर्म्स ऑफ सपोज आई फाइंड अ वन इम्पॉर्टेंट डेटा, तो रेवेन्यू रिसीट्स का ग्रोथ 4.8% है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 फॉर द पीरियड नवंबर टू अप्रैल टू नवंबर. वैसे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज बाई 15.5, नॉन टैक्स रेवेन्यू माइनस. तो आपका जो रेवेन्यू का साइड होगा उसमें टैक्स भी आएगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आएंगे. नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक फीस हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फीस होगी, स्कूल्स के अंदर होगी, तो बेसिकली वो प्लस फाइन्स, तो दोज आर बेसिकली नॉट टैक्सेशन. ठीक है, सो दोज आर बेसिकली कंसिडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू. देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जो ग्रोथ है वो 4.8 है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यू कैन फाइंड इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर growth of 10.8. So that means receipts have grown less and expenditure more. और इसकी वजह से जो डेफिसिट है वो डेफिसिट भी हायर होगा. फिस्कल डेफिसिट का ग्रोथ ये ईयर ऑन ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है. तो आप इस टेबल को जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसके अदरवाइज कंटेंट में यहाँ नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे आप. Here basically evaluating the performance of union government non-debt receipts. तो non-debt receipts are basically what? Non-debt receipts मतलब बजट के अंदर अलग अलग रिसिप्ट्स है. रिसिप्ट्स को आप कंसेप्ट वाइज डिवाइड करोगे तो रेवेन्यू वाला भी आएगा और कैपिटल वाला भी आएगा. बट कैपिटल वाले पार्ट में एक कंपोनेंट होगा बोरोइंग का, वो डेट हो गया. कैपिटल में और क्या आएगा? जो डेट नाउ डिसइन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो आपका नॉन डेट रिसिप्ट्स है. डिसइन्वेस्टमेंट है वो भी नॉन डेट रिसिप्ट्स हो गया, बट वो रेकरिंग नहीं होता है. फर्क रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर ही है. कैपिटल में जो ट्रांजेक्शन होगा वो नॉन रेकरिंग होगा. दैट मीन्स यू कैन सेल योर इक्विटी वंस बट यू विल बी गेटिंग टैक्स रेवेन्यू एवरी ईयर. तो जो रेवेन्यू अकाउंट है वो रेकरिंग आता है, कैपिटल अकाउंट वाले रेकरिंग नहीं होते. तो जो नॉन डेट रिसिप्ट्स है बेसिकली उसमें टैक्स आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट में मतलब हमारा जो एस्टिमेट है मतलब बजट ने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर के ग्रोथ को फोरकास्ट नहीं किया. इस लाइन का एक्चुअल मतलब ये हुआ कि बजट अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर के फोरकास्ट कर ले कि जीडीपी का ग्रोथ इतना होगा तो हमने कंजर्वेटिव रखा, मतलब वी आर मोर रियलिस्टिक इन फोरकास्टिंग. रिमेंबर जब हम बजट को प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि उसका एक्चुअल क्या उतना होगा. तो अगर आप बजटेड काफ़ी हाई रखते हो और रियलाइजेशन काफ़ी कम हो गया, तो जैसे आपने स्टार्ट में मान लिया कि कहा फिस्कल डेफिसिट इतने नंबर का होगा, 5.2% होगा, बोलने को आप बोल दो, बट वो ईयर का होता है. उस ईयर में पता चला कि 6 month के अंदर ही वो टारगेट पूरा हो गया,
तो ये डेटा भी एक्चुअल में इधर बहुत सारे डेटा आपको इस फॉर्म के मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू अचीव द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, तो ये जो ईयर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो टारगेट रखा था उससे क्या हो गया, एक्सीड कर गया वो। तो जब आप कंजर्वेटिव अजम्पशन कहते हैं इसका मतलब है इट इज मोर प्रैक्टिकल, इट इज नॉट ओवर एस्टिमेटेड, इन दैट वे इट इज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट पैराग्राफ कर लो। The union government's non-debt receipts, the union government non-debt receipts, the union government non-debt receipts comprise revenue receipts which include tax and non-tax both, revenue receipts which include tax and non-tax both, and non-debt capital receipts, non-debt capital receipts like disinvestment, profit of PSUs, नेक्स्ट पैराग्राफ में after the decline of revenue during pandemic year, the revenue receipts registered a robust growth in financial year 2022. This revenue revival was attributed to rebound in collection of all major direct and indirect taxes, within bracket except excise duty. The gross tax revenue registered growth of 15.5%. The gross tax revenue registered growth of 15.5%. From April to November 2022. Now this part is basically indicating that growth. It is 15.5 for the gross tax revenue. Out of that direct tax का जो growth है वो 23 है, in corporate tax का growth 22. Related to the indirect tax the growth is, मतलब जो relative growth है वो direct tax में ज़्यादा हुआ और indirect tax में कम है, and because of that जो relative share है वो direct tax का क्या हो गया है, बढ़ गया over the indirect taxes, because direct taxes are growing at a faster pace as compared to the indirect taxes. तो indirect taxes grown at a rate of 8.5%, ये aggregate है. Out of that custom, union excise duty
सर्विस टैक्स, बट बिकॉज सर्विस में रिकवरी स्लो होने का रीजन 22 का डेटा ही है। रिमेंबर जो मोस्ट सीवियरली हिट सेक्टर था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, इट वाज सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर की रिकवरी स्लोअर है, और उसकी रिकवरी अगर स्लोअर होगी तो उसका जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन होगा वो भी कम होगा। एग्रीकल्चर वाज द लीस्ट अफेक्टेड, इंडस्ट्री वाज आल्सो अफेक्टेड, बट इंडस्ट्री रिकवर्ड फास्टर एज कंपेयर टू दी, क्योंकि सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्शन काफ़ी समय तक रहे, सर्विस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन काफ़ी समय तक रहे, तो सर्विस सेक्टर के अंदर जो रिकवरी है वो स्लोअर है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सूनर एट अ फास्टर पेस। कंटिन्यू करना, द indirect taxes increase at a rate of 8.5%, increase at a rate of 8.5% during the same period, 8.5% during the same period. Next paragraph. Revenue growth has been more than the growth in GDP. Revenue growth has been more than the growth in GDP. Is a testimony to the effectiveness of efforts taken by government to expand the tax base and enhance tax compliance. So some structural reforms like introduction of GST, and digitalization of economic transaction. Introduction of GST and digitalization of economic transaction. Have led to greater formalization of economy. And hence expanded the tax net. So this is summing up all in one line, that with the enhancement of the digitalization of economic transaction, that is basically online transactions, and with that more and more part of the economy is formalized, or with that formalization of the economy, the tax net has expanded, and because of that, tax buoyancy is reflected in the tax collection. Other tax administration measures such as faceless assessment and appeal, simplification of returning file, assistance to taxpayer,
in getting familiar with system, comma, generation of e-way bills under GST system, generation of e-way bills under GST system, generation of e-way bills under GST system, and information sharing between government departments, has helped in higher tax compliance, has helped in higher tax compliance, has helped in higher tax compliance. That means this part is basically explaining why we are observing tax buoyancy. So tax buoyancy we are seeing because of some structural reform and because of the administrative policy reforms. तो अगर आप किसी भी जगह पब्लिक फाइनेंस वाले किसी क्वेश्चन को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे टैक्स बॉयंसी अगर दिखानी है तो टैक्स बॉयंसी के रीसेंट रीजन हो गई है कि वी आर अपार्ट फ्रॉम द रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी इज वन पार्ट, सो इकोनॉमी इज रिकवरिंग, दैट इज वन थिंग, but apart from that there are some structural reform and there are some administrative tax policy changes. Because of that we are observing a higher tax compliance, that means more and more people are basically paying taxes, and therefore the overall tax collection as a percentage of GDP is also increasing. That means the growth of tax is more as compared to the growth of GDP. That is why you can see the tax GDP ratio has gone up. Next part. Now it is basically highlighting about the direct taxes part. The high growth in gross tax revenue, the high growth in gross tax revenue, the high growth in gross tax revenue is mainly due to growth in direct taxes, is mainly due to growth in direct taxes, growth in direct taxes. So some growth in corporate income tax, growth in corporate income tax, as well as in personal income tax, as well as in personal income tax, as well as in personal income tax has been substantial, and as a result the share of direct tax, in the overall tax collection, is about 52%, in financial year 2023, in financial year 2023, in the overall tax collection in the financial year 2023. ब्रैकेट में वहाँ पे कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स का परसेंटेज 26 लिख रहे हैं, ये ओवरऑल मिला करके डायरेक्ट टैक्स हो गए. So direct tax is 52, indirect tax is 48. Direct tax as a percentage of total is 52, indirect tax is remaining 48%. Next paragraph. While direct taxes have safeguarded the revenue buoyancy, while direct taxes have safeguarded the revenue buoyancy, after comma, indirect taxes such as custom and excise duty,
such as custom and excise duty have acted as such as custom and excise duty have acted as flexible policy tool during the fiscal response to the pandemic. During the fiscal response to the pandemic. Fiscal response to the pandemic. The GST has evolved and stabilized. The GST has evolved and stabilized. GST has evolved and stabilized as a vital revenue source, as a vital or important revenue source for central and state government both. For central and state government both. For central and state government both. The gross GST collection registered growth of 24.8%. 24.8%. The gross GST collection registered growth of 24.8%. 24.8% in financial year 2022. फाइनेंशियल ईयर 2022, बट ये रेफरेंस याद रखेंगे अप्रैल टू दिसंबर वाले डेटा का, अप्रैल टू दिसंबर डेटा के लिए बेसिकली. The pickup in GST collection was due to a combined effect of rapid economic recovery, post pandemic, after comma, the nationwide drive against GST evader, fake GST against GST evader and fake bills, and various rate rationalization measures, undertaken by GST Council, to correct inverted duty structure, रेट रैशनलाइजेशन का मतलब है प्रोडक्ट को आप एक ग्रुप से बेसिकली दूसरे ग्रुप में मूव कर रहे हैं, जो जिस पे अगर लेटर से 18% का टैक्सेशन अर्लियर हो रहा था, आपने उसको मूव करके 12% पे कर दिया, मतलब वो प्रोडक्ट के ऊपर 18% वाज नॉट जस्टिफाइड, सो यू आर मूविंग इट फ्रॉम 18% टू 12% and so on. So rate rationalization measures have been taken, and because of those different measures, the GST collection has also improved at a rate of 24.8% during that period of April to December 2022. So there has been growth in the direct taxes as well as there is growth in the indirect taxation, and as a result overall tax revenue has increased, and that has basically helped to sustain higher expenditure also. Now related to the expenditure side, we find that the most important significant change in the expenditure is in the capital expenditure. तो यहाँ तक बेसिकली अभी अलग अलग टेबल में उसी पार्ट को एक्सप्लेन किया गया, जीएसटी का कलेक्शन, कंटिन्यूड मोमेंटम इन द जीएसटी, कैन जस्ट इग्नोर दोस टेबल.
ठीक है, माइनस सोर्सेज बेसिकली फिर होंगे फिर अदर फॉर्म के लिए. सो कैन मूव टू दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साइड. मतलब जब आपने पार्ट डिवाइड किया तो याद रखिएगा इसका एक साइड इनफैक्ट आपका रेवेन्यू साइड है और जो सेकंड साइड है दैट विल बी दी एक्सपेंडिचर साइड. और एक पार्ट और भी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर है, जब कभी ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का इम्बैलेंस है तो अगर इम्बैलेंस होगा ऑब्वियसली इम्बैलेंस है देयर. सो हाउ दैट इम्बैलेंस विल बी करेक्टेड. अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो मनी कहीं ना कहीं से तो आ रहा है. तो फ्रॉम वेयर दैट मनी इज कमिंग. सो बोरोइंग का मतलब हो गया नाउ वी हैव टू कंसीडर द अमाउंट ऑफ डेट ऑल्सो. डेट के सोर्स में एक्सटर्नल डेट भी हो सकता है और इंटरनल डेट भी हो सकते हैं. तो रेवेन्यू तक का पार्ट ये, इसके आगे बेसिकली यू आर वेटिंग एक्सपेंडिचर साइड. सो जस्ट इस टाइम में सिर्फ एक्सपेंडिचर फ्रंट या एक्सपेंडिचर साइड लिख देना. last few years have underlined the importance of counter cyclical fiscal policy measures. Counter cyclical fiscal policy measures. What is counter cyclical? डाउनटर्न है, रिसेशन है, तो आपको काउंटर करना है बाय स्पेंडिंग मोर. So, but for that purpose, government has to spend more. So that is counter-cyclical policy. Last few years have underlined the importance of counter-cyclical fiscal policy measures to support the economy. During a crisis. As a result, total expenditure of union government increased to 17.7%. Of GDP. 17.7% of GDP in financial year 2020-21. 17.7% of GDP in financial year 2020-21, which was higher than the previous 5-year average. Of 12.8%. So that expenditure which used to be around 12.8% of the GDP went from 12.8% to 17.7%. The government adopted a pragmatic approach of increasing its expenditure in a calibrated way. Prefer to use this type of line. The government adopted a pragmatic approach of increasing its expenditure in a calibrated way. So, upon ensuring the basic safety net for vulnerable, which was basically in terms of food transfer and cash transfer, basic safety net for the vulnerable. After comma, the emphasis of government expenditure shifted to capital expenditure. Emphasis of government expenditure shifted to capital expenditure. Earlier the focus was basically to deal with the safety net for the vulnerable. Then it shifted from that expenditure to the capital expenditure. As a result, we find that capital expenditure to GDP ratio has increased significantly. Capital expenditure to GDP ratio has increased significantly.
in the recent past, in the recent past, in the recent past, करंट इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 2.9% ऑफ द जीडीपी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. सो फ्रॉम अराउंड लेस देन 2% to 2.9% ऑफ द जीडीपी, सो दैट इज अ लार्ज नंबर, वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है. यहाँ पे अलग अलग टेबल बेसिकली यहाँ गिवन है, इसको आप यूज कर सकते हो. लाइक वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. दिस इज राइजिंग शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर क्या है? गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर क्या है, वो इंडिकेट कर रहा है. और दिस इज अबाउट हाई ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड. मतलब ये जो राइट साइड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो 63.4. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर था उसमें कितने का ग्रोथ हो गया. फर्स्ट वैल्यू क्या है, दिस इज बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय जीडीपी है. यहां पे जब आप नंबर लिख रहे हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या दिखा रहा है, सिर्फ ग्रोथ रेट दिखा रहा है. सो 63.4% ग्रोथ रेट. तो ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा होगा तभी तो उसका रिलेटिव शेयर भी क्या होगा, इंप्रूव होगा. एंड दिस राइजिंग शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो शेयर है वो टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीजिंग है, एंड दैट राइजिंग शेयर इज बेसिकली इंडिकेटेड. सो फ्यू लाइन यू कैन राइट टू हाईलाइट दिस टेबल. कंटिन्यू कर दोस्तों. द कैपिटल एक्सपेंडिचर, the capital expenditure is rising as a share of total expenditure, is rising as a share of total expenditure, is rising as a share of total expenditure, and it has increased it has increased from 12.1% in financial year 21 to 19% in financial year 23 to 19% in financial year 23. Full stop. In financial year 23 alone, capital expenditure recorded a growth of 63.4%. 63.4%. 63.4%. So this rising capital expenditure is expected to promote growth rate of economy further. Is expected to promote growth rate of economy further. Is expected to promote growth rate further. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर हैज चेंज्ड. कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हेल्प इन क्रिएटिंग मोर ओवरहेड कैपिटल, and therefore it is expected that India will be able to realize its potential growth rate in the future with that high rising capital expenditure. उसके बाद का जो डिस्कशन है सर चैप्टर के अंदर, इट डील्स विद द स्टेट फाइनेंसेस. यूजुअली स्टेट फाइनेंस मतलब बहुत कोई लार्ज क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं रहता. यूनियन बजट मतलब यूनियन गवर्नमेंट के लिए हम ज़्यादा बेसिकली डिस्कस करें. ये डेट भी एक्चुअल में यूनियन गवर्नमेंट के एंगल से होता है. तो लास्ट हेडिंग बना लीजिएगा इस चैप्टर के लिए, डेट प्रोफाइल ऑफ गवर्नमेंट. डेट प्रोफाइल ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज चैप्टर के अंदर बेसिकली फिर बहुत सारे टेबल ज़्यादा इनफैक्ट गिवन है चैप्टर के एंड में. जहाँ पे ये चैप्टर इनफैक्ट ओवर हो जाता है उसके बाद अलॉट ऑफ टेबल इज बेसिकली गिवन. लाइक एनेक्शन में काफ़ी सारे टेबल है इसके अंदर.
तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता है एग्जामिनेशन के लिए। डेट प्रोफाइल, ठीक है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डेट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो एक टेबल इंपॉर्टेंट होगा। सो दिस चार्ट इज बेसिकली शोइंग दैट डेट जीडीपी रेशियो, तो डेट जीडीपी रेशियो वाज एज हाई एज 59.2। डेट जीडीपी रेशियो है, मतलब इकोनॉमी का जितना जीडीपी है उसका ऑलमोस्ट 60% डेट है, ऑलमोस्ट 60% डेट। 1% डेट तो अडानी के ऊपर ही हो गया, बट ये पूरे इकोनॉमी का है, ठीक है। पूरे इकोनॉमी का डेट बेसिकली ये 60% है, एंड इट इज नाउ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, बट वाई इट विल बी डिक्लाइनिंग? ऑब्वियसली वो फिस्कल स्पेस बढ़ेगा, हमारा जो गैप होगा वो रिड्यूस होगा। जब गैप ज़्यादा होगा तो बॉरोइंग ज़्यादा होगी, जैसे जैसे गैप नैरो डाउन होता जाएगा वो डेट का प्रोफाइल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, इट विल कंटिन्यू टू फॉल। सो एक्सप्लेन दिस पार्ट फर्स्ट। Given the unprecedented fiscal expansion, given the unprecedented fiscal expansion, given the unprecedented fiscal expansion in 2020, in 2020, after comma, rising government liabilities, rising government liabilities, rising government liabilities have emerged as a significant concern, have emerged as a significant concern across the globe, across the globe. मतलब ग्लोबली अगर आप जीडीपी डेट कैलकुलेट करोगे और हर कंट्री का जीडीपी ले लिया अगर हमने, तो वो 91% है। मतलब जो ग्लोबल डेट है एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, that is basically 91. In India it is 60. So there are other countries who are not doing, मतलब जो उनका जो सिचुएशन होगा वो that will be worse as compared to the Indian economy. So the global GDP debt ratio is basically 91%. You can add that. The global government debt, the global government debt is at 91% of GDP, 91% of GDP in 2022, in 2022, and for Indian economy, and for Indian economy, and for Indian economy, it declined from 59.2%, 59.2% to 56.7% in 2022, 59.2% to 56.7% in 2022. और ये टेबल एक्चुअल में जो डेट है उसके कंपोजिशन को दिखाता है। दिस टेबल इज डेट पोजीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज है, अमाउंट है, मतलब गवर्नमेंट का जो डेट है उसके अलग अलग कंपोनेंट है। तो जो पब्लिक डेट है उसका एक कंपोनेंट इंटरनल डेट है, बट इंटरनल डेट के कंपोनेंट, इंटरनल डेट इज बेसिकली योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एंड देन एक्सटर्नल डेट, मतलब जो पब्लिक डेट है वो A1 प्लस A2 है। A1 के अंदर मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल दोनों है, और A2 इज योर एक्सटर्नल डेट। देन पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेज, एंड देन द टोटल लायबिलिटीज। ये हमारा ओवरऑल लायबिलिटी का कंपोनेंट होता है। मतलब जैसे एक्सपेंडिचर के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू के अलग अलग कंपोनेंट है, वैसे ही डेट के भी अलग अलग कंपोनेंट है। इंटरनल डेट है, इंटरनल डेट के भी सब डिवीजन है। एक्सटर्नल डेट होगा उसको भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं कि कितना कॉमर्शियल बोरोइंग है, कितना असिस्टेंस के बेसिस पे हमें लोन मिला हुआ है। सो देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा रिलेटेड टू दैट, बट you must be just familiar with that the overall debt has broadly two component, internal and the external, and the proportion of external debt in the public debt। अगर हम सिर्फ internal external में डिवाइड करें
then it is 95.1 external, 4.9 internal. External borrowing is more and it is significant, that is 95.1% of the total debt is basically from the external sources. Just mention this point. The composition of debt profile, the composition of debt profile show that external debt is 95.1% of total public debt. 95.1% of total public debt. ठीक है, इसी रेट को जीडीपी टैक्स डेट जीडीपी रेशियो को कम करने के बारे में रिकमेंडेशन है, जैसे एफआरबीएमए के अंदर रिकमेंडेशन है कि वो फर्दर ब्रॉड डाउन करना है। बट कोविड ने बेसिकली जितने भी पैरामीटर्स थे जो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स थे, तो फॉर दैट पीरियड वो सारे रिलैक्स हो गए। बट वी हैव टू अचीव ओवरऑल, इन लॉन्ग रन वी हैव टू अचीव दैट टारगेट। सो दिस चैप्टर वाज बेसिकली डीलिंग विद द गवर्नमेंट फिस्कल स्पेस, मेनली द रेवेन्यू साइड एंड द एक्सपेंडिचर साइड, और जो गैप आ गया वो डेट के फॉर्मेट में है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्टेट फाइनेंसेस, और फिर बाद में कंक्लूड हो जाता है बाय वेरियस टेबल्स। तो वो टेबल आप सिर्फ रेफर कर सकते हो, रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स का कितना अमाउंट है, फिर यूनियन गवर्नमेंट का फिस्कल पैरामीटर क्या है। तो वेरियस पार्ट्स हैज बीन गिवन बेसिकली इन दिस। तो वहाँ तक का जो कंपोनेंट था बेसिकली वो रेलिवेंट हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 3 वाज ऑल अबाउट दिस। द नेक्स्ट पार्ट विल बी चैप्टर नंबर 4 which talks about the monetary management. So up to this was basically fiscal. External debt is internal debt को देखो, डेट बेसिकली जब हम कहीं से रेज कर रहे हैं तो फॉर इंटरनल जो डेट का मार्केट है ना वो डेवलप नहीं है इंडिया में। हाउ मेनी पर्सन बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? डेट लेने का मतलब होता है कि डेट इज विल बी लेकिन थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेंगे ना। गवर्नमेंट नॉक करके डेट तो लेने आ नहीं रही, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट इशू किया, सिक्योरिटी इशू किया, who will be buying those securities. If we buy that security, we have lended money to the government. But problem with that is that government promise a very low rate of return. तो गवर्नमेंट अगर लो रेट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस करती है तो उससे बेटर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेविंग अकाउंट में। तो फिर इसका मतलब जो इंटरनल डेट का मार्केट है वो डेवलप नहीं हो रहा है। जो डोमेस्टिक बॉन्ड के ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो काफ़ी कम मिल रहा है गवर्नमेंट से, क्योंकि इसके कंपोनेंट देखो आप, उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है। तो कहने को वो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है लाइक, बट जनरल पब्लिक उसको जनरली बाई नहीं कर रही। तो वो जो मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है। जब मार्केट वो अंडर डेवलप्ड होगा, जैसे ओवरऑल कैपिटल मार्केट इंडिया का है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं है अभी। दैट मीन्स जो हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इनटू दैट कैपिटल मार्केट, अगर आप वो पैरामीटर बना दो तो गिवन द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट मार्केट इज स्टिल वेरी अंडर डेवलप्ड। तो जब वो मार्केट अंडर डेवलप्ड होता है तो इंटरनल सोर्सेज हमारे पास फिर कम होते हैं, देन यू हैव टू रिलाई ऑन दी एक्सटर्नल सोर्सेज। बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल डेट इज मोर एज कंपेयर टू दी internal debt, but that basically require a policy correction. You can do it, but it will take some time. You have to give more return on the domestic, और वो मार्केट पे डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अब नेक्स्ट पार्ट में मॉनेटरी मैनेजमेंट है, एंड आफ्टर दैट विल बी मॉनेटरी के बाद वी कैन मूव डायरेक्टली टू द सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। कुछ माइनर चैप्टर होंगे, यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो, और जो मेजर चैप्टर है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ग्रोथ के लिए, मॉनेटरी के लिए, फिस्कल के लिए और सेक्टर वाइज। लाइक एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल है, या माइनर एक दो इनफैक्ट 12 चैप्टर है, आउट ऑफ दैट वी कैन 5, 7, 8 रेलिवेंट, रेस्ट यू कैन ऑल्सो मैनेज। ठीक है, अब ये नेक्स्ट में होगा। अब आपकी जो नेक्स्ट अभी क्लास है वो बजट की है। थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप, अराउंड 10-15 मिनट, आफ्टर दैट बजट।